guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So in today's video I will be showing you how did I celebrate this year's Diwali 2021. So I started shooting one day prior to Diwali. The first thing that I do in a day is I go to college. So this is my college, my second home. मैं कॉलेज के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ फैंसी गई, वहाँ मुझे कुछ ख़रीदना था। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ की, मतलब आई गॉट अ स्लाइड माइग्रेन आउट देयर, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। बट फाइनली हम वहाँ पहुँचे और इस गली से हमने एंटर किया जहाँ फूलों के दुकान थे। सो जस्ट लुक एट दीज फ्लावर्स, दे आर सो mesmerizing। मन किया कि मैं सारे के सारे फ्लावर्स उठा लूँ वहाँ से, दे वर सो प्रिटी। देन वी डिड सम स्ट्रीट साइड शॉपिंग। वहाँ आपको जो ज्वेलरी है, जंग ज्वेलरी है, बहुत ही कम दाम में आपको मिलेगा। देन वी वेंट टू बाय सम चादर मेखला। मुझे एक्चुअली नहीं ख़रीदना था, बाकी मेरे दो फ्रेंड्स को लेना था, सो आई वेंट अलॉन्ग विद देम। So there's a really wide variety of chadar mekhla in the market, and those were really pretty. Then we went to get some rangoli for Diwali. आपको 10 रुपये का पैकेट मिलेगा, पर पैकेट 10 रुपीज़ है। मैं घर आ गई हूँ। इट वॉज़ अ हेक्टिक डे बिकॉज़ कॉलेज के बाद शॉपिंग करने जाना इज़ होल लॉट ऑफ अ टास्क। मैं घर आके ही शूट नहीं कर पाई क्योंकि आई डिडंट हैव दैट मच एनर्जी लेफ्ट विद इन मी। So I'm shooting it right now. So let me show you what all I bought from Fancy. मैं एक्चुअली लाइट्स की शॉपिंग करने गई थी, लाइट रंगोली दिवाली रिलेटेड थिंग्स एक्चुअली, नॉट एनीथिंग एल्स। सो पता नहीं आपको देखने में कोई इंटरेस्ट होगा भी कि नहीं, लेकिन वही लाई हूँ मैं एक्चुअली। द डेकोरेशन दैट वी डू इनसाइड द हाउस, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग इट राइट नाउ, सो लेट्स गो। I bought these lights for rupees 200. ये बहुत ही खूबसूरत है, the quality is very nice. And then I bought these tuni lights, these were for rupees 30. Then of course rangoli, the entire packet was for rupees 100. And then I bought some tea light candles. These were so pretty. It was decorated with some sparkles and beads, so it was really pretty, and it cost me rupees 50. I made this wall hanging by myself using plastic and some leftover clothes, fabric that is. Then I wrapped it with fairy lights. So for decoration I also bought some marigold flowers. Actually we can take mango leaves in place of lychee, but I took lychee because it was available in my house. So I made the circle using the leaves, and in the middle I will be putting the flowers. I saw this design on YouTube and I really wanted to try it out, and it turned out to be really nice. So the final decoration of the wall is this. It looks so pretty. I was so much satisfied with what I did. So for the tea light candles, I'll be taking some glasses and I will be filling it up with water. Then I'll be adding some color to it. Now I have seen in some of the videos they have used plastic cups in place of glass. Please don't use that because that is very toxic for your health.
So my preparations for Diwali is almost done. So now I have to shoot a video. So that's all I have to do today. Hi guys. So I'm ready for the shoot. Hi everyone, wishing you all a very happy Diwali. So today is the day of Diwali, and the first thing that I did today was finishing up the putting off lights outside. It took a really lot of time. So I am left to do the rangoli. हम फटाक से रंगोली बना लेते हैं. Let's go. सो बनाना ट्री भी लग गया है जहाँ हम रात को दिया जलाएंगे. सो सबने लगा लिया है लोकेलिटी में, एंड सी हाउ हैप्पी दे आर. सो फाइनली एवरीथिंग इज़ डन. घर का काम सब कुछ हो गया है, एंड नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज़ लाइटिंग द दियाज, क्योंकि अभी अंधेरा होने को है. सो आई विल बी वेरी क्विकली गेटिंग रेडी. So we are done guys, let us move outside now. I have a lot of work outside, so let's go. So this is the lighting outside the house. बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में. It took a lot of hard work, and yes, hard work really pays. It looked so beautiful. Now I'll be lighting diyas.
Now we will be doing some Pet Puja, and here we will be ending the vlog. So I will be ending the Diwali preparation vlog here. I hope you all have enjoyed watching this video. If you do not forget to give this video a thumbs up. And those who are new to my channel, please do subscribe to my channel and hit that bell icon to get notifications whenever I come up with new video. So stay tuned and bye bye.